Jai Hind, welcome to Dev Talks. 1962 war, India and China. बहुत ही खराब सिचुएशन, एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया. एज अ मैटर फैक्ट जो हमारी हिस्ट्री है हमको पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है उसके बारे में. मैंने और कर्नल अजय रैना ने इसके बारे में हमने पहले बात करी है. हमने एक बेस लाइन दिया था इस डिस्कशन के ऊपर. अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, स्पेशली लद्दाख में क्या हुआ था. बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो हमको पता नहीं है. हमको पता है कि वो वॉर में हमारा नुकसान काफी हुआ, काफी जान माल का नुकसान हुआ और हम वो जंग जीत हारे, ये हमको पता है. बट वो एक्चुअली क्या हुआ, कैसे हारे, ये चीजें हमको ज्यादातर पता नहीं है. सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर द पार्ट 2 ये डिस्कशन के बारे में, ताकि वी ऑल लर्न अ लिटिल मोर अबाउट आवर हिस्ट्री. सर, Thank you, Adi. Jai Hind to everybody. Yeah, we must learn. History, of course, teaches us a lot, and नहीं सीखेंगे तो फिर मार खाएंगे. Happens every time. सर आपने मतलब एकदम इतना बड़ा डायलॉग दे दिया शुरू में ही, तो अब इसके बारे में क्या करें. सर, इसके वॉर के तो दो बड़े बड़े पार्ट्स हैं. दिस वी नो. वन इज ऑफ कोर्स द वॉर इन द ईस्ट में क्या हुआ था. ठीक है, अरुणाचल का, नीफा का उस टाइम पे. इंसिडेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी अभी अरुणाचल गए हुए थे, तो काफी एक्सपेक्टेड था कि चाइना की तरफ से काफी जवाब आएगा, बट कुछ हुआ नहीं अभी तक. आएगा, थोड़ा डिलेड होगा प्रोबेबली, बट दिस थिंग. बट सर, मेनली मेरे को नॉर्थ के बारे में बात करनी है, क्योंकि इसमें ये रीजन के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये रीजन इंडिपेंडेंस के बाद हमने पूरी तरह से क्लेम ही नहीं करा इसको. सो आई वांट टू बिगिन विद दैट, सर. Yeah, okay, Adi, yes. Just a point that, like you said, war तो हम हारे थे. But if you look at the individual actions, the gallantry, the way soldiers fought, despite all the limitations, handicap, no proper equipment, no RT support at many places, no big caliber weapons, no rations at many places. So as a soldier, I feel that possibly it was a loss at some level. But if you look at the grassroots fighting, most of places we did very well. I mean, soldiers lived up to the expectation of the country. Having said that, हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लास्ट वाले सेशन, पिछले सेशन में, प्रीवियस सेशन में, कि मैकमोहन लाइन तो ड्रॉ कर दी थी 1914 मार्च की, वो जो एग्रीमेंट है उसने नॉर्थ ईस्ट का तो कवर कर दिया. वेदर चाइना एग्री टू इट और नॉट, वो अलग कहानी है, अलग चीज है. when we come to Ladakh, that to eastern Ladakh, which actually touches Tibet, इसकी एक there is no demarcation which has ever happened. So what had actually happened about 100 years before that, in 1841, when General Zorawar Singh went all the way from Jammu and Kishtwar, then he kept on moving eastwards and landed up at Kailash Mansarovar. And then the famous battle which happened in the month of December 41, where he was finally killed. Uske baad, they had a treaty. The treaty was between Sikh Empire. Basically, it was Dogra army fighting. But since Dogra army under that time Raja Gulab Singh and later on Maharaja Gulab Singh was part of Sikh Empire, so technically it was a treaty between Sikh Empire, including Dogras, Tibetans, Chinese, and a few Baltis who had also taken part. So they decided thereafter कि ओके, जो हो गया. उसकी वर्डिंग बड़ी प्यारी सी है कि हमें आपस में कोई भी रंजिश नहीं है. लड़ाई हुई है लेकिन रंजिश नहीं है, और इसके बाद हम जो हमारे हिस्टोरिकल बाउंड्रीज हैं हम उसकी ऑनर करेंगे. अभी इसको आपको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा कि चाइना ने उस टाइम, तिब्बत को पीछे से जो बैक करने वाला है, इंसाइड करने वाला चाइना ही था उस टाइम भी. दो चाइना एंड तिब्बत वर टू सेपरेट एंटिटीज. उस टाइम चाइना को मार पड़ रही थी ईस्ट में, चाइना की ईस्ट में. लास्ट टाइम मैंने रेफर किया था कि जो हांगकांग में एपिसोड हुआ था, उसे ओपियम वॉर्स हुई थी, बॉक्सर डे, उसकी ट्रीटी उसी साल में हुई थी. तो चाइना वाज बीइंग बिटन, इट वाज बीइंग बॉक्स्ड फ्रॉम बोथ साइड्स. इधर से डोगरास ने पीटा, उधर से ब्रिटिश ने, यूजिंग इंडियन फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस ऑफ few states of Rajasthan, regular army, then police, which was basically Sikh personnel. So China kind of tried to maintain balance, and they agreed. They said this is historic. Now historic boundaries are not defined. It is something which is out of our tradition, and for years it went on like this. When
J&K state was formed in 1846 under Maharaja Gulab Singh. Britishers did try to demarcate this boundary. Part of it was done, part of it was let. वो लंबी स्टोरी है, उसमें हम नहीं जाएंगे. तो बेसिकली क्या हुआ कि जब 47 में लाइक यू सेड जहां जहां पे हमारी महाराजा के टाइम की महाराजा ऑफ J&K, बिकॉज 47 से पहले इट वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ द कंट्री. ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जो बाकी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट सबसे बड़ी थी. तो दे महाराजा हैड फ्यू पोस्ट अलोंग दीज प्लेसेस. वो सारी हमने विड्रॉ कर ली. जब पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, अगेन वी स्पोक अबाउट इट, जो तिब्बत में भी हमारी प्रेजेंस है हमने वही विड्रॉ कर ली. तो बेसिकली हमने मैदान खुला छोड़ दिया for China to do whatever they wanted to do. But what China did, and we kept on hoping and hell कि सब ठीक था. उन्होंने 1949 में जाके, like last time we spoke, उन्होंने जाके सिंकियांग को कैप्चर कर लिया. Before they came into Tibet, they first captured सिंकियांग. और सिंकियांग की पॉपुलेशन, जिसको आज यूगर्स का बोलते हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन, तो उन्होंने उनको पहले तो कैप्चर किया. फिर उनका तिब्बत, सिंकियांगीज जो जिंगयांग बोलते हैं, उसको उनका तिब्बत के साथ प्रॉब्लम थी. तो तिब्बत के कुछ हिस्से, नॉर्थ वेस्ट तिब्बत के, वो उनको दे दिए सिंकियांग को खुश करने के लिए. एंड उनके मेल पॉपुलेशन को चाइना ने रिक्रूट किया ना बिग वे. और हम लोग वी डिडंट रिएक्ट. Now basically what China was doing, now China was preparing to do something in Ladakh using local troops, because जो Chinese mainland से आते हैं, और आज उनकी सेम प्रॉब्लम आज भी है. They can't fight in Ladakh. It's beyond them. The altitude, the rarefied atmosphere, kind of temperatures and winds and all, they just can't. तो उन्होंने 1949 में पहले सिंकियांग को कैप्चर किया. जब वो तिब्बत में घुसे तो उन्होंने तिब्बत की एक बॉर्डर फोर्स करके एक बनाई. और पूरे इस बेल्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम, इफ यू लुक एट लद्दाख नाउ, फॉर दोज हु, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, आई होप एवरीबॉडी नोज वेयर लद्दाख इज. लद्दाख इज बेसिकली, इफ यू लुक एट टॉप नॉर्थ मोस्ट पोर्शन, इट इज कराकोरम रेंज. द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ लद्दाख is Karakoram range. Then you come नीचे comes the Shiok Valley. Shiok Valley से और साउथ में आओगे तो you come across Ladakh range. Ladakh range basically is a range standing between Leh and Nubra Valley or Shiok Valley. Nubra Valley and Shiok Valley are one and same thing. And इसी के ऊपर वो खरदुंगला पास है. Then you have Leh, which is actually Indus Valley, because Indus is flowing through this. Now south of Leh you have a Stoke-Kangri range, which is basically part of a bigger range called Janskar Mountains. So you have Karakoram, you have Ladakh range, then you have Janskar range. Janskar range के साउथ में Janskar है, और सुरू वैली है, कारगिल वैली, and उसके साउथ में Great Himalayan range है, where Ladakh finishes. So between Karakoram range and the Great Himalayan range is basically complete areas Ladakh. Now since the rivers, when we say Indus Valley, we say Shiok Valley, naturally they drain somewhere. So that means they drain to the west into Baltistan. वहां से होके then they come south to Pakistan. तो वेस्ट कॉरिडोर खुला हुआ है. ईस्टर्न पाकिस्तान की तरफ. लेकिन ईस्टर्न का जो कॉरिडोर है, वो जो कराकोरम रेंज है ना, which actually starts from या K2 is biggest, तो वखान कॉरिडोर से स्टार्ट होता है, पामीर नॉर्थ से. वहां से आते आते it comes almost east, and when it reaches Ladakh, जिसके where you have Shasgam, you have glacier, Siachen, Remo glacier, all these are part of basically what do you call, branches of or in the lap of Karakorams. जब ये ईस्ट में आता है, ये जहाँ हमारा DBO है, वहाँ पे there is something called Karakoram Pass, which was a historical, which I refer to historical boundary between India and Tibet and Xinjiang, that region. वहाँ से नीचे आके ना, it curves to the south and bifurcates into two ranges, Karakoram 1, Karakoram 2, which are lower height, but the terrain there is very rugged. And वहाँ वो जो 1 and 2 finish होते हैं, वहाँ पे you see this Galwan Valley and what do you say, called Chipchap River, and that valley comes. Chipchap River also finally flows into Nubra. So this is the Ladakh as we understand. इसमें जो eastern part है, which is rugged part. West, so I told you rivers are draining to the west. So as you go to the west of Ladakh region into Baltistan, altitude goes down and you have a better user-friendly terrain. But to the east, as you come towards Tibet, you are actually getting into very rugged, unmapped, and terrain not explored. Even certain parts today are unexplored. ये जो toughest part of it is Aksai-Chin. That is, लेह से अब जब ईस्ट में जाते हैं, वो जो कंप्लीट एरिया DBO के नीचे वाला, जहाँ पे चिपचाप रिवर है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, गोगरा है, पिंगांगसो के ऊपर, दिस इज ऑल वेस्टलैंड इज अक्साई-चिन. वो हमारे लिए तो वेस्टलैंड थी. नेहरू जी ने कहा ये बाल मेरे की तरह के सिर पे बाल ही नहीं उगते तो क्या करना है, बट उस वेस्टलैंड के अंदर से G219 विच वी स्पोक लास्ट टाइम हाईवे बन गया, विच कनेक्टेड लासा विथ सिंकियांग.
So वो highway actually ran through our area. Now the historic boundary got breached when that highway came up, because historic boundary, traditional boundary, as agreed to between all these people in 1842, was supposed to run to the east of Aksai. Aksai was part of Jammu and Kashmir. लेकिन ये हाईवे आया उसके बीच में से कटता हुआ. अभी चाइना अंडरस्टूड दिस, वट एवर इंडिया में डू वन डे दे विल रिएक्ट. सो वो हाईवे पे रुका नहीं, उसने हाईवे से फिर इन रोड्स बनानी शुरू कर दी टुवर्ड्स वेस्ट, दैट इज टुवर्ड्स इंडियन लद्दाख. एंड इट kept on happening like last time we spoke. So now we come to situation of 1959, so called 1959 claim line. So चाइना ने जब कार्टोग्राफी अग्रेशन स्टार्ट हुई थी इंडिया के साथ, एंड इंडिया ऑब्जेक्टेड ने, लाइक लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, पीएम ऑफ चाइना सेड नो नो, ये पुराने मैप हैं, हम लोग don't worry, these are old maps, we don't claim any such. They were basically buying time to complete their highway ban gaya, and then they said okay, they threw up something on India's face, it's called 1959 claim line. बोला इसको border मान लेते हैं, basically trying to giving buffer to their highway which was now ready in 1959. and इसको और यहाँ से दोनों तरफ से आर्मी हटा लेते हैं. Just sign a, there will be no force for about 20 miles either side, only police can come and civil defense force can come. India said no, because the 1959 line itself was inside Indian territory. उसने basically बनाई थी to protect their highway 219. So then the problem started. Now, when they threw this map on us, they had done the spade work. Xinjiang में recruitment पूरी हो गई थी. Tibet में they had recruited people, they had made their bases, they had made roads coming from highway towards India at various places, laterals, and they had one division worth of troops deployed in that area by 1961. One division, that is one brigade, where we have DBO, opposite DBO. DBO अब कराकोरम रेंज पास जो है उसके एकदम वर्टिकली जब साउथ नीचे आते हैं, there's a place called DBO, Daulat Beg only. To the a bit of southeast of it is something called Tri Junction or Track Junction. यहाँ पे पुराना सिल्क रूट, दो रूट मिलते थे, that's called Tri Junction. So this area opposite this, they had a brigade. Chinese called it regiment. Now south of this is that Galwan wala ilaka pura, where this thing happened a couple of years back. So they had a brigade looking after that area. Now this, and to the south of this Galwan wala patch is the Chipchap River and Gogra Hot Springs. To this complete belt, they had a brigade. Then comes Pingangso Lake. So Pingangso ke north mein they had one brigade, and then one brigade down south opposite our Trishul, and going down to Demchok and beyond. फिर हिमाचल स्टार्ट हुआ था उसके बाद, there's no issue. Now they have one division here, one division being served by good road network, with the possibility of reinforcements landing up anytime as they wanted. Only weakness they had was they didn't have air force. बाकी चाइना ने पूरी तैयारी कर ली. हमारे पास एयर फोर्स तो थी, लेकिन हमारे पास ट्रुप्स क्या थे. हमने पहले तो वहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो वाज लुकिंग आफ्टर, दो वी डिडंट एग्री 1959 प्रपोजल, बट हमने वहाँ पे सिविल पुलिस ही रखी थी. सीआरपीएफ की सम पोस्ट वर देयर इन गलवान, दैट एरिया. कोंकला इंसिडेंट हैपेंड व्हिच वी स्पोक लास्ट टाइम, वेयर दैट इंस्पेक्टर करम सिंह वाज टेकन एंड ब्रेन वॉश्ड एंड ऑल. That was first bloody confrontation which happened on that border. And we had only one battalion of J&K militia. J&K militia is what we now as call it as Jammu and Kashmir light infantry today. So J&K militia was basically what, जब 47-48 का हुआ था conflict, we don't call it war. So locally people were recruited. So Leh had its own militia. Nubra had militia, which was headed by famous Colonel Chuan Rinching, who got MVC in 47. Similarly, Punch had his own scouts. Nushaira had his own scouts. Chamb had. So all these guys were later on amalgamated into something called Jammu and Kashmir militia. They had few battalions, and later on, because of their good work in 71, they were all converted into Jammu and Kashmir light infantry. So there was a battalion, क्योंकि 47 की वॉर के बाद they had placed one battalion of J&K militia in Nubra Valley, looking after Shiok Nubra Valley, because वहाँ से Pakistan touches us, Baltistan is next door. There was a battalion there which was away from eastern Ladakh. Technically, it was basically northwestern tip of edge of Ladakh. There was another battalion of J&K militia which was looking after complete area where division was sitting. So enemy division is sitting 4 brigades. डिवीजन ऑल्सो 3 ब्रिगेड की होती है, वैसे इनकी 4 ब्रिगेड की डिवीजन है. हमारे उनके सामने एक बटालियन, दैट टू मलेशिया बटालियन. देन दे इंडक्टेड 5 चार्ट. अभी हुआ क्या,
जब जनरल थिमिया रिटायर हुए तो जनरल थोराट जो थे, he resigned. He was expecting to be made chief. Logically, he should have been made chief, but they looked for a better option, softer option. So General Pran Thapar was promoted as army chief. General Pran Thapar was Western Army Commander. So this all area was under Western Command because Northern Command nahi thi us time, with the headquarters in Shimla. So when he went there, General Daulat Singh came, armored officer who had never served in mountains. But one good thing about General Daulat Singh was that he loved Ladakh. Ladakh is, I mean, many of us, including me, we love Ladakh. You go there, you like the barren. Somebody asks you, to ghas nahi ugta, but it's a place which certain people grows over certain people. So he was one of those. Grows over you. Correct, sir. Yeah. Correct. So because of that love for terrain, as an army commander, he had gone to a lot of nooks and crannies of Ladakh. So he knew Ladakh better than General Thapar, who probably never went towards Ladakh. उनके नीचे जो कोर कमांडर थे, एसडी वर्मा, जनरल एसडी वर्मा, who had been protesting earlier कि आप हमें कह रहे हो कि लद्दाख को बचाना है, वहाँ ट्रूप्स ही नहीं है. I need a division worth of troops. I need artillery. I need rations. I need milk tin. Nothing was given. उन्होंने frustration में आके, when General Thapar was Pran Thapar, Karan Thapar's father, when he was a Western Army commander, General S.D. Verma wrote a letter to Prime Minister. Ki bhai, you in Parliament of India, you keep declaring ki army is now sent to Nifa, army is now taking over Ladakh. Yahan to hai hi kuch nahi. We don't have proper dresses to wear. Leave road to chhod do, aap barrack chhod do. There's nothing. So General Thapar threatened him, General S.D. Verma ko, ki withdraw this letter. He said, no, I'll not withdraw. And he said, okay, don't withdraw. So he made sure the letter ki copy doesn't go to Prime Minister. And because thought process ये थी कि चाइना से लड़ाई नहीं होगी, चाइना will only threaten. मलिक साहब भी कह रहे थे लड़ाई तो होनी नहीं चाइना के साथ. हालांकि बीएन मलिक had two phases. One, he said कि China is going to attack us at some stages कि लद्दाख में कुछ नहीं होने वाला. So when General Thapar went as army chief, General S.D. Verma also resigned. He went off, and a new officer called General Bikram Singh. He was called Hawaldar Major of Indian Army. As a Lieutenant General, he will dress up as a Johan, stand in queue langar. कहीं भी खाना बन रहा होगा ना किसी लंगर में, just go and stand there wearing a patka, and then he'll catch people not serving good food. He was known to do things which nobody. Soldier, and unfortunately he got killed in a air crash in Punch later on. And in Jammu we have a crossing named after him, Bikram Chowk. Oh, beautiful. This map is there. So what happened is General Bikram Singh was a soldier, so he said nothing doing. Unlike General S.D. Verma, he became very aggressive. He said, no, you given me task, please equip me. Otherwise, I can't do anything as a corps commander. I had nobody there. So slowly, troops were started being sent to. Okay, too complex. हाँ ये वाला है सर. These are basically handwritten maps somebody had made about. आप बोल रहे थे फिफ्थ जाट, अगर आप बीच में स्क्रीन के देखें फिफ्थ जाट का रेफरेंस है. 5 जाट पहले आई, 5 जाट आई. Incidentally, 2 Mahavir Chakras of 47-48 conflict, that is Chuang Rinchen. He was MVC and now he was lieutenant. This because he got recruited as a young volunteer at the age of 17. So they didn't know what to do. So MVC दे दिया तो उसको बोला इसको नायब सूबेदार बना दो. So he didn't have uniform in 47-48. So a JCO of a GR battalion gave him his dress. बोला इसको पहन लो, become a नायब सूबेदार. Youngest नायब सूबेदार ever made in Indian Army was now by this time he had got his commission. He was lieutenant. He was MVC and CO of 18GR. That time Lieutenant Colonel Hari Chand, who did wonderfully well in 47-48. He is remembered for the commando raids he used to carry out. He was commanding 18. Both are MVCs. So 5 Jat was a battalion which was moved in. 5 Jat ka a company they put in DBO. Rest of battalion was Pengangso and South. Later on, then 1 Jat came in. 18 GR, of course, there. To cut the story short, when the thing flared up in October 62, we had a loose brigade facing 1 division. And we had no artillery, they had tanks. जब शिरीजाप की बैटल जहाँ पे मेजर धन सिंह थापा, who sacrificed his life fighting against all odds, tanks came on to assault. पीछे लेक है and आगे शिरीजाप is where you now आज की डेट में जो चाइना के पास है, जो पेंगोंग से के नॉर्थ बैंक पे है. So they were
I'll just indicate. So the Shirija will be right next to the Pangongso area. पेंगांगसो में जहाँ सो लिखा है ना, TSO सो, हाँ जी, इसके अगर आप लेक को क्रॉस करके उधर ऊपर की तरफ जाओगे तो जहाँ से लाइन आ रही है एक ब्लू वाली, blue line. हाँ, where it touches the lake, that's a Shirjap, that area. जी. So Finger 8 के बाद पड़ेगा ना सर? sorry? This will be after Finger 8, sir, just before the Kunak Fort. Yeah. Finger 8 itself hugs Shirjap. जी. So यहाँ पे we had tried to claim this land and China was saying this is part of us. So उनकी 59 की जो लाइन थी वो शिरजाब को अपने अंदर लेती है, whereas Shirijap is not supposed to be part of Chinese territory. So their tanks came on to the infantry company which is deployed at 3 places with the lake in the rear, and they fought with the literally lake to the wall, their back to the lake instead of wall, and they all got killed there. So this is a preparation. So what China does around 24, see if you look at 62 war, it happened in 2 phases. First was 4th week of October when they opened up everywhere. Then they took a pause, and then they came again towards later half of November, and then it got finished by 28th November. So first phase में using those troops which I told you were प्लान क्या था चाइना का कि ऊपर वाले सेक्टर में, दैट इज गलवान एंड डीबीओ वाले इलाके में, those Xinjiang Muslims will be told to attack, and Chinese regular PLA will be behind supporting them. Whereas towards south, Pengangso and Chishul, they had plans to attack themselves, boosted by Tibetan troops. So this was the plan. So they had a lot of, if you see Hakikat movie, Dharmendra Wali, which is a symbolic representation of what happened with in Rezangla, is inspired by Rezangla battle. उसमें आप देखेंगे और ये फैक्ट है कि वो ह्यूमन वेव अटैक आता था. Chinese will come 300-400 people, because cannon fodder prepared by Chinese, maro jaake. So they were being thrown in like this, because if they turn back, they'll be killed by regulars who are behind them. So they had to walk in front. So this is how China has been. I mean, they're not changed through centuries. So when they opened up, DBO ilake mein, Chuan Rinching was deployed there. There was a, like I said, company of Jats and a company plus of about 8 platoons of militia. So they were all looking after DBO. So what they did, firstly they tried to assault, because हुआ क्या था, orders ये थे दिल्ली से कि you inch forward and keep Chinese at bay. Now you can inch forward in a military sense only when you have backup, no? You inch forward with somebody, one leg on ground. There's nobody behind you. You're just inching forward. No, you are just moving forward, and you're being projected into area without any support. कोई सड़क नहीं, like I said, rations का issue था, दवाइयाँ नहीं थी. सबसे बुरा ये था कि किसी को फ्रॉस्ट बाइट हो जाए तो उसको उठाएं कैसे वहां से. हेलीकॉप्टर्स थे गिने चुने, and such a big sector. So but opposite us were Chinese who came well prepared. उनके लिए orders क्या थे कि you go and occupy traditional lines. फिर देखो जो पहाड़ी आगे है ना जो dominate करती है, go and occupy that. So DBO इलाके में क्या हुआ था, when they came in front, they found first line of peaks. When they climbed up, they found second line of peaks. So there were 11 tiers. And करते करते वो ट्राई जंक्शन पे आ गए, दिपसांग जो प्लेन्स है ऊपर और डीबीओ. सो जब ये होता रहा, जितनी पोस्ट थी इंडियन आर्मी की आइसोलेटेड, किसी में 4 लोग, किसी में 10 लोग, किसी में जेसीओ, किसी में सेकंड लेफ्टिनेंट, किसी में कोई भी नहीं. तो पहले तो उन्होंने अटैक कर दिया एंड दे वर बिटन बैक. whosoever could fight they fought. There was no withdrawal initially. लेकिन उस टाइम जैक मलेशिया का एक ऑफिसर था 2IC, अगेन पीपल डोंट नो हिज नेम, सरदूल, मेजर सरदूल सिंह. He was MVC. He's MVC AVSM VSM, and nobody knows him. He is a person who's supposed to know Ladakh like back of his hand. He knew every inch of Ladakh. He had number of tenures in Ladakh, and he was Chawang Rinching's 2IC, battalion's 2IC. Colonel Nihal Singh was a CO. तो उनकी एक पार्टी गई थी, बिकॉज जब आप मैप देखेंगे ना इस पे नहीं मिलेगा, एक सुल्तान चक्षु करके जगह है. सुल्तान चक्षु इज एट द बॉटम ऑफ गलवान, चिपचाक रिवर के उसमें. तो दैट एरिया वाज नॉट इवन एवर विजिटेड बाय इंडियन आर्मी. उसने खुद तो देखा हुआ था एज पार्ट ऑफ पेट्रोलिंग, बट वी हैड नो क्लू, मैप्स भी नहीं थे. तो ही हैड गॉन विद अ पार्टी देयर एंड दैट पार्टी गॉट आइसोलेटेड. उनका रेडियो सेट खराब हो गया, दे वर डीम्ड डेड. एंड न्यूज इन श्रीनगर
core headquarters was कि DBO गिर गया. DBO was not, it didn't fall to enemy. In fact, Chinese never came to DBO. They never captured DBO. लेकिन हुआ क्या, या रूमर चलने, या कम्युनिकेशन टूट गया, ये पोस्ट विच और देयर छोटी छोटी पोस्ट गिर गिर के वापस आ रही थी DBO की तरफ, उधर से 2AC की पार्टी गायब हो गई. Colonel Rinchen, that time Lieutenant Rinchen, he got injured, evacuated. So finally हुआ क्या, DBO was told कि आप वापस आ जाओ पीछे, उसके ससरला पीछे है, you come back. One guy, Dorje, no, big history is known to everybody. There's a guy called Dorje who was loitering around somewhere and people withdrew. Dorje was militia guy. He came back and he found there was nobody in the DBO. Probably he had gone to attend nature's call. I don't know. Nobody knows what he was doing, but he was not there when people were told to withdraw, and he was left behind for 6 months. This guy, from October 62 to February 63, this guy stayed alone in DBO. So technically, DBO was under Indian occupation all the while. It was never taken by Chinese. We had one soldier sitting there because राशन तो था बाकियों के लिए, थोड़ा सा केरोसिन भी था बुखारी जलाने के लिए. उसने peak of the winters, and he being a Ladakhi, he survived alone. Just imagine sitting in a post which has been abandoned. And so this is one technical thing which is funny, but it's very important that DBO was not vacated by India because one soldier held it on for 6 months. So 6 महीने के बाद जब फौज वहां गई सीज फायर के बाद, क्योंकि सीज फायर हुआ था उसके बाद nothing could happen and people could only go up with Red Cross mediating between two countries in February and March next year because of too much of cold and permafrost. So DBO तो people abandoned, but we held on. But DBO के सामने ट्राई जंक्शन एंड बियॉन्ड चाइनीज को जो जो कंफर्टेबल लगा कि ये जगह ठीक है, यहाँ से सब दिखता है, दे ड्रू देयर ओन लाइन ऑफ बंकर्स, एंड सिंस दे वर वेरी वेल इक्विप्ड एंड दे हैड मोटर्स, दे हैड आर्टिलरी टू बैक देम अप, तो वहां उन्होंने बेस बनाया. नीचे जो गलवान वैली में 5 जाट की एक और कंपनी थी, उसका अफसर था मेजर अजीत सिंह. मेजर अजीत सिंह वाज कॉन्फिडेंट कि मैं रोक लूंगा बिकॉज ही वाज सिटिंग एट अ प्लेस गोगरा के ऊपर हॉट स्प्रिंग्स में, यहाँ पे डिफाइल वाज सच दैट ही कुड स्टॉप देम. बट थिंग्स हैपनिंग इन DBO एंड थिंग्स हैपनिंग डाउनवर्ड्स साउथ में, जब श्रीजाब भी गिरा, ही वाज टोल्ड टू abandon and come back because जनरल विक्रम सिंह का ये आइडिया बड़ा क्लियर था कि these people, the way they've been forced to deploy by Delhi, these people will not be able to fight. You can't fight in isolation, 4 people, 5 people, and then you have 300 people attacking you. So he was now making kind of arrangement that people come back and fight from place of strength. That never happened because people who were coming back, somebody went west, somebody came down south. It was not a planned withdrawal. It was all left to people themselves. So Ajit Singh ka jo party tha, before he could withdraw, Chinese attacked, but then he fought on, and Lieutenant General that time Brigadier T.N. Raina, who was a brigade commander, उस time brigade बन गई थी 114 brigade चिशूल वाली. It was just when battalions came in, a brigade headquarter also came. Brigade headquarter Leh में था, लेकिन उनका attack headquarter was in चिशूल. So General Brigadier T.N. Raina told him withdraw. So he says, no sir, I can fight. He said, no, you don't understand the big picture, you come back. So he left few people to cover the withdrawal, but as they were withdrawing, they were attacked. So now for 7-8 days nobody knew उस पूरी कंपनी का क्या हुआ है. हुआ क्या कि when they got stuck, he made 2 subgroups, one under JCO, one under himself, and he told JCO कि आप साउथ में जाओ, go to Phobrang. Phobrang क्या है? When you go to Pengangso, आज भी जब जाओगे टूरिस्ट बन के, moment you hit Pengangso का western edge, when you reach Pengangso Lake, you look up north, there's a village called Phobrang, 12 kilometers. It's a model village. So Phobrang के आगे मर्च में केला है, उसके नीचे हॉट स्प्रिंग्स गोगरा है. So he told the JCO party कि आप इधर से निकल आओ. But what he was not aware of कि मर्च में केला के ऊपर वो Chinese were sitting already there. They had taken that ridge which separates Phobrang from Gogara. Not Marsmikla proper, the complete ridge was taken by them. So they fought it out. And this guy goes west because he had come to know कि DBO वाली पार्टी ऊपर से आ रही है, withdraw कर ली है. He said, okay, I'll go and join up with them. And when he joins up with them in Shiok, he finds that people are almost frozen to death. Almost frozen. See, it's a month of November, October ending. ना खाने को कुछ. And the whole valley doesn't get the sun. सूरज आता नहीं है वहाँ पे. So वहाँ पे the field temperature, जो actual field is about 3 to 4 degrees lesser than the actual temperature. अगर बाहर पहाड़ी के ऊपर temperature 4 डिग्री है तो वहाँ 0 डिग्री है because there's no sun for complete day because of the terrain. But one good thing he did,
From there, he making a radio set. He gave his location and he asked for air supplies. And then he was fit enough. So he said these 45 people who had come from DBO and they were sitting at half frozen. Everybody with chilblains and frostbite. He knew they are not going to survive. Rations bhi nahi the. But he himself was okay. So he passed the message to Leh that so and so location at that junction of Shiok and some other Nala, they're stuck there. So supplies were airdropped, and all 45 of them survived because of basically Wow. they're tough Jats and they were Ladakhis. So these guys survived. So this officer came back. He came by a longer route and he reached Shul. श्री जाप में मेजर धन सिंह थापा थे, उन पे अटैक आया एंड इट वाज अनफेयर बैटल, इन्फेंट्री वेपन्स, बिगेस्ट वेपन हियर वाज एमएमजी, और उधर से आगे टैंक्स, आर्टिलरी, मोटर्स, तो कहने की बात ही नहीं है. नाउ दिस इज अ सेक्टर व्हेन दे वर फाइटिंग, सेंडिंग देयर ट्रुप्स टू अटैक. लाइक आई टोल्ड यू, ऊपर वाले इलाके में दे वांटेड दीज सिंकियांग गाइज टू अटैक एंड पीछे से पीएलए थे वाले थे, तो उनको तो उन्होंने दबा दबा के कैनन फॉडर की तरह यूज किया. पेंगांगसो के और नीचे they had PLA attacking. So PLA was, they didn't want to buy casualties. So they carried out massive assaults. Then tanks came up. And how do you fight tanks with the infantry weapons? And then you have nothing. And first thing which happened to Major Dan Singh Thapa's company was unka radio stick blew up. So there was no communication. Nobody knew in Trishul ki ho kya raha hai. The CEO was not aware. So he asked for somebody who was volunteer to go in a boat. Pengongso ki minimum chadai is 5 kilometers. It's not a small lake. So 5 kilometers, go and see what's happening. So one Havaldar, he volunteered. He took a salt boat, went. And when he reached there, he found कि जो उनकी जो deployment थी, 2 जो pimples थे बीच में उनका headquarters था, 2 pimples के ऊपर Chinese were firing at the boat. So he came back. He said, वो pimples हो गए. अब जो बचाया वो बचाया. कंपनी हेडक्वार्टर जहाँ पे मेजर शशदान सिंह की लोकेशन थी, 1 platoon, and he said lot of noises were there, so fight is going on there, but nothing can be done. So CEO said, okay, now please go and guide other people and get those people back. There's no point fighting there. They'll not survive because 2 platoon तो खत्म हो गई और तीसरी लड़ रही है लास्ट वाली. So these guys go there. Again, this guy goes there. And there's another boat which is there behind the company. उसमें एक में 6 लोग, एक में 14 लोग जो जख्मी, wounded, who had fallen back from those 2 pimples, the platoons, उनको डाला. वापस आ रहे थे, 1 boat sank, everybody died, and only 6 guys from the company came back injured. And Major Dhan Singh, of course, when they killed everybody in Shri Jap, so Major Dhan Singh Thapa, because of his epaulets, Chinese had this what do you call it, principle that they never used to kill officers. If they knew he's an officer, they'll not kill in the captivity. Otherwise, though, they killed so many kept after capturing. So 15-16 जवान पकड़े गए थे जिनके पास वेपन अम्यूनिशन खत्म हो गया, जख्मी थे, उन सबको मार दिया पकड़ के. His epaulets saved him. India had no clue, so he was declared dead, given a PVC, and then Chinese radio made an announcement that the PVC of India is in our captivity. So Major Thapa then came back later in PW exchange. थोड़ा और नीचे आते हैं. So what is happening is, जब श्री जाप में हुआ ना, then there was a pause, so called pause in battle, जो अक्टूबर एंड में खत्म हुआ, अक्टूबर एंड से स्टार्ट हुआ था. फिर नाउ इंडियन आर्मी रियलाइज कि अगर वो टैंक लेके आ गए श्री जाप के ऊपर, तो चशूल, तो वो बिकॉज चशूल में क्या था, चशूल हैड अ एयरफील्ड, द नियरेस्ट एयरफील्ड इन द फॉरवर्ड जोन वाज चशूल. एक लेह में था, फिर नीचे फुचके में है, और वो दमचौक के पास है, वो ऐसे ही है, दे आर स्ट्रिप्स. सो चशूल का गिरना ये था कि चशूल से एक्सेस टू लेज अलोंग इंडस. हाँ जी, बिकॉज अलोंग अ रिवर मींस गोइंग इज इजी. पेंगांगसो गिर जाता तो चांगला खड़ा था बीच में. चांगला इज अ मैसिव, अगर आप ये जो चांगला जो हम जाते हैं घूमने के लिए पेंगांगसो, वहां पे अगेन लद्दाख स्काउट्स 1 platoon held on for 3 days, everybody got killed. Tundup's platoon, nobody came back. So just take a second, sir, चुशूल का मेंशन कर रहे हैं, प्लीज रीड पेंगोंगसो. पेंगोंगसो के नीचे you'll be able to see the चुशूल एरिया. आज भी वहां पर हमारा एयरफील्ड है, एंड उसके पीछे स्पंगूर है, और उसके नीचे देयर इज रेजांगला, जिसके बारे में हम बात करेंगे. और यहाँ से ये रोड जाती है पेंगोंगसो से ले की तरफ. वहां पर एक बहुत ऊंचा पास है जो सर बोल रहे थे, जो चांगला पास.
18,350 feet, sir. Yeah, So, Chandler, that's it. So Indian Army and General Bikram Singh, like I said, he was very pushy. He said, no, nothing doing. We'll not be able to save Ladakh. Leh. Ladakh, fall of Leh means fall of Ladakh. yeah. जब कैपिटल गिर गई आपकी और पॉपुलेशन वैसे नहीं है. सो दे स्टार्ट इंडक्टिंग डोगराज, एक बटालियन ऑफ डोगरा भी आई, फिर एक और जाट्स की बटालियन आई. द कैप्टन एंड सबको ले में रोक लिया. नाउ ले बिकेम प्रायोरिटी सडनली. बट 114 ब्रिगेड और 70 ब्रिगेड भी रेज कर दी, एक ब्रिगेड और बन गई. लेटेंट जनरल दैट टाइम ब्रिगेडियर ग्रेवाल, मिलिट्री क्रॉस थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के. तो देन द एयर लिफ्टेड a field battery, 13 field regiment and 20 lancers armored regiment थी. उनके AMX लाइट वाले टैंक थे, 6 tanks. They were airlifted and dropped. They were landed in Chishul. अब हुआ क्या कि जब ये गन्स और टैंक्स जाने लगे, उससे पहले किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया था इतना वेट लेके, बिकॉज एयर चिशूल की जो एयर स्ट्रिप थी, इट वाज कच्ची स्ट्रिप. सो कभी 47 48 ले की बात करेंगे तो वो भी बड़ी कहानी की कैसे लैंडिंग हुई थी. तो यहाँ क्या प्रॉब्लम थी? फर्स्टली यू आर लैंडिंग एट अ कच्ची स्ट्रिप, देन यू आर वेरी एनिमीज वाचिंग यू. स्पैनगुर गैप के सामने दे हैड अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, और स्पैनगुर गैप के अगर आप पेंगोंग ऊपर की तरफ देखोगे, पेंगोंगसो से नीचे जाते हो ना, तो येला 1 येला 2 करके पोस्ट है. देन देयर इज अ ग्रुंग हिल, एंड देन यू हैव दिस गैप, देन यू हैव मगर हिल, एंड मगर हिल के बाद रजांगला, रजांगला के बाद सागला. सो बेसिकली दिस वाज द डिप्लॉयमेंट ऑफ 13 कुमाऊं व्हिच केम लेटर. एंड एक कहाँ से आ रही थी बटालियंस? कोई श्रीनगर में है, कोई बारामूला में. 13 कुमाऊं को बारामूला में से पैदल चला के लाए, फ्रॉम बारामूला पैदल, बिकॉज जब टेंशन मच गई ना कुछ गड़बड़ होने वाली है. सो मीन्स तो थे नहीं, सड़क थी नहीं जिला में, पगडंडी थी. सो फ्रॉम बारामूला दे केम वॉकिंग टू श्रीनगर. श्रीनगर में गाड़ियों में डाल के सोनामर्ग में छोड़ दिया, एंड फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम सोनामर्ग थ्रू कारगिल, द्रास, एवरी दे वॉक्ड एंड रीच्ड चिशूल. So this is how troops were inducted. Tough times. अब जब वो एयरक्राफ्ट को लैंड करना है तो एवरीबडी रेज हैंड्स कि ये नहीं हो सकता विद दिस काइंड ऑफ वेट. फर्स्टली क्रॉसिंग ग्रेट हिमालयन रेंज इटसेल्फ इज अ चैलेंज ऑन द ओल्ड एयरक्राफ्ट. सो चंदन सिंह थे, स्क्वाड्रन लीडर चंदन सिंह. लेटर ऑन he played a massive role in 71. He said I'll go, and another squadron leader was squadron leader Chauhan. These two officers flew. दे टच डाउन, और जैसे टच डाउन हुआ तो पहली लैंडिंग में ही उस एयर स्ट्रिप का वारे के न्यारे हो गए, बुरा हाल हो गया, बिकॉज इट वाज नॉट मेंट टू टेक दैट काइंड ऑफ शॉक. एंड नाउ अनलोड किया, आधे घंटे के बाद दूसरा जहाज आ रहा था, स्क्वाड्रन लीडर चौहान. तो ही वाज टोल्ड कि भाई एयर स्ट्रिप इज ऑलमोस्ट गॉन, एंड चंदन सिंह टुक ऑफ. ही सेड यू कैन गो बैक इफ यू वांट, बिकॉज देयर इज नो प्लेस टू लैंड. ही सेड देखा जाएगा आगे, एंड ही लैंडेड. सो आई मीन of course, I told 6 guns and 6 tanks finally reached Trishul. So Trishul had a good firepower now available. Problem क्या थी कि Trishul की जो डिप्लॉयमेंट थी, स्पैनगुर गैप के आगे Trishul था, सामने प्लेन्स है Trishul में. उसमें तो उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए ले आए. 13 कुमाऊं भी आ गई, GR बटालियन 18 GR was already there. As they were going south, Rezangla, Sagla, these places were out of RT range. वहाँ अपनी RT was not able to reach because 25 pounder guns. See, 25 pounder range gun is a very beautiful gun, World War II vintage, but it had lesser range. So अब इन्होंने डिप्लॉय तो कर दिया, and now they are expecting कि चाइना ने एक्सपेक्ट क्या किया? चाइना ने अनाउंस किया after they took Shirjab, they announced on the radio कि now PLA will take Trishul, which belongs to us. It was openly declared, and it was combination of the declaration and tanks coming into Shirjab that Indian Army started pumping troops like भेजो भेजो भेजो. But वो भेजो तो करो क्या? वहाँ पे one couldn't dig the bunkers because frost जमा हुआ था. It is November. तो tools you couldn't dig. Now you couldn't dig, so how do you create मोर्चा? तो आपने पत्थर उठा के आपने भी संगड़ बना लिया. सिर के ऊपर चाहिए ना जब आर्टी की, knowing very well कि आर्टी is going to fire, so you needed overhead protection. Nothing. Tin sheet रख दी, एक tin sheet. Now the tin sheet is okay only for maybe rain, which doesn't happen there. So first, when it started, they just blew up. Same bunker संगर्स के जो पत्थर थे, वही वेपन बन गए अपने ऊपर, because जब उनको शेल लगता था आगे से, तो they only used to break it to splinters, and गोले का अम्यूनिशन अंदर आए ना आए, उसका जो स्प्लिंटर्स है, इसी के पत्थरों ने अपने जवानों को मारा, because there were the loose sounds, stones, and
that kind of a thing. So जब रजांगला पे अटैक हुआ तो मेजर शैतान सिंह की कंपनी वहाँ पे डिप्लॉयड थी. He had deployed his platoons very well, कंपनी हेडक्वार्टर्स. आगे जो ईस्ट एंड वेस्ट जो उनका फ्लैंक्स है ना, दे वर sheer fall. Rezangla itself is about, I think, if I'm not wrong, it is about 18,000 feet or 17,000 feet. 18,300 feet, sir. Yeah, it's that height. तो उनके sheer drop था साइड्स पे. तो इट एक्सपेक्टेड एज पर एप्रिसिएशन कि जब भी वो आएंगे वो सामने से. लेकिन वो आए रात को, म्यूल बेस्ड, and they came from 3 directions. And this is one instance where, despite them taking unorthodox approach, unexpected approach, troops were not taken to a surprise because troops were alert. उनकी छोटी छोटी पेट्रोल्स आगे गई हुई थी. Whatever could not be seen from the defenses, these people had thrown the patrols out, 3-man patrol, 4-man patrol, and they came and reported कि आवाजें आ रही है बहुत ज्यादा. When this happened and Major Shaitan Singh, he understood कि कुछ होने वाला है, and रात का टाइम है, they fired flare. पहले जो पेट्रोल गई थी, पहले उसने वो एक पेंसिल सी होती थी, हमारे फौज में अभी भी है, छोटा सा फ्लेयर फायर होता है उसके साथ, एंड एक मोटर से फायर किया बाद में, एंड दे कुड मेक आउट कि सारे आगे सामने, दे वर ऑल डिप्लॉयड इन फ्रंट. सो ही आस्क्ड फॉर हेल्प. ही सेड वी आर गोइंग टू गेट. Oh my, every time there is a climax in the story, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है. Just 1 minute, I will try and get her back. 1 second wait कर लेते हैं. I mean, एकदम अभी तो this is the climax of the story. I'm back. I don't know what happened. हाँ, मैं वही बोल रहा था कि जब क्लाइमैक्स होती है ना सर स्टोरी की, तब कुछ ना कुछ होना पड़ता है. हो जाता है. So he said, I am expecting some kind of action. So that Sagla or Zangla, since they were away from the main Chishul battleground and out of range of artillery, तो शुरू से पता था कि इनको खुद ही लड़ना पड़ेगा अपने. They'll get no help. So the arrangement was that whichever is attacked first, Sagla or Zangla, they'll send reinforcements to other one. तो he asked for reinforcements. Reinforcements के आने से पहले ही अटैक हो गया. Now, but when he fired the flare, and then they saw this massive gathering of Chinese, 3 sides. चौथी तो अपनी थी. So Chinese also panicked. They opened up with artillery. No, they opened up with artillery when it was dark, so they couldn't see. So their artillery was firing all over the countryside without really hitting our commanding troops. So this carried on for a while. But moment first light came in the morning, and this is about 18th November, 18th November. 18th. They could see the targets and they started firing, and that's when their artillery started bombing us. And हमारे ही पत्थर फिर टूट के हमारे ही bunkers ही सारे बैठ के उसके अंदर ही जवान started getting killed. So, but they kept on fighting. They kept them at bay, and finally they brought the tanks up. They started firing in direct firing role, and उसके बाद we know that out of 120, all 114 were killed. 4 were taken prisoners. One guy who was thought to be dead and thrown into उसको उठा के फेंक दिया संगड़ में. And few hours later he got up, and this Ram Singh, he started walking, and Chinese knew they saw him walking backwards. They didn't do anything because probably they also wanted him to carry the story back to the, because होता क्या ना, propaganda, when somebody goes and says कि ऐसे ऐसे हुआ, हम सारे मारे गए, जिन्हें मरते हुए लोग देखे होंगे ना, जब वो कहानी सुनाता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है. अब सबको मार दोगे ना, तो उसके बाद assumptions है ना. अभी सिरजाप में क्या हुआ वो तो मेजर धन सिंह थापा ने आके बताया बाद में, लेकिन उस टाइम तो पता ही नहीं था क्या हुआ है. तो यहाँ ये था कि they let one Ram Singh go. There's another version which says कि Major Shaitan Singh had told 3 guys, you go back and tell the story. But what I would like to believe share the same thing, that Ram Singh का ये है कि I was being seen by Chinese, they didn't shoot me. पहले मरा हुआ सोच के छोड़ दिया था, then they let him go. So Rezangla fell after a valiant fight, and this is probably one of the toughest when nobody actually survived. Those who were taken prisoners were taken prisoners in bad shape. उसके बाद I told you nothing happened for 3 months. February में जब Red Cross को लेके गए हैं तो वहाँ our troops were found with fingers frozen on the trigger, and जो rifle के wooden parts होते हैं, they were all shattered. They had been bombarded so heavily
कि कुछ नहीं छोड़ा। जो एक तो क्या बोलते हैं, शेल्स एंड मोटर्स के और गन्स के एंड टैंक के उन्होंने तो किया एमएमजीज ऑफ कोर्स, प्लस आई टोल्ड यू अपने पत्थरों ने तोड़ा, उनका जो ऊपर से सब सिंक कर गया। Today only I tweeted that in one trench there were 3 dead bodies, 2 real brothers and one brother-in-law, one family. So, I mean, we, I, sorry, I went to Rezangla with my family. This was 2009, and I told my wife, I said, किसी बच्चे को ना तीर्थ यात्रा करानी तो यहाँ लेके आओ. This is the place where Indians must come. Anyways, so Rezangla to gaya. Sagla wale couldn't react, and that they became a part of history. Now what happened at I told you Magar Hill to the south of Gap and Gurung Hill to the north. Gurung Hill mein there was a GR 18 GR ka company, and the officer was I'm forgetting his name, company commander, young guy, but they were very well deployed in the sense they had RT to support them from the rear, and these two companies were very well coordinated. सामने गैप था, but and they were fighting very well. There was a RT officer called Second Lieutenant SD Goswami, अच्छा, जो 13 फील्ड की जो गन थी ना, उनका जो ओपी अफसर था. So where he was sitting, he could see Chinese, but he couldn't see them properly. So he with his party, they had gone ahead, so called in no man's land. अब no man's land तो यहाँ क्या था, अपना ही इलाका था. They were coming into our area, our area, but between two forces, they had gone ahead. बैटल लाइन के बीच में जो जगह थी. हाँ, because he said I'll only take shoots when I can see them. And artillery, if you read the history of 62 or 13 field ki, or many observers who wrote later on, that one day of battle was fought by artillery, because RT, when troops are attacking terrain like Leh, Ladakh, when it's open, there's no cover other than few rocks here and there, you become a very good target for artillery. So they fought very well, but हुआ क्या कि उनकी, because of their artillery, wire कट गई, communication कट गया. So OP officer, basically OP officer is an officer, then he has a technical assistant who helps him take technical data, because you have to work out grid reference of enemy who's moving, so you need a guy who's degrees and minutes, थोड़ा mathematics सा होता है. And there were 2 operators. So these operators went looking for repairing the line. They repaired once, twice, third time they got killed in a bombardment. So ये 2 लोग बचे. Then a splinter hit Goswami on his head and he fell. One guy left, his assistant. So he kept on taking shoots, because technical assistants, because since they work with the officer and they coordinate the work, he's also good enough to take shoots. Then he also got killed. इतने में जो आगे वाली, जो इनके पीछे वाली प्लाटून इमीडिएटली जिनके आगे आए हुए थे, वो प्लाटून्स फेल, 2 प्लाटून्स फेल, एंड दे वेंट बिहाइंड, एंड जो पीछे वाली प्लाटून थी वहां पे पूरी कंपनी वाज फाइटिंग एज अ काइंड ऑफ अ जॉइंट फोर्स. नाउ दिस गोस्वामी इज लाइंग डेड. कंपनी कमांडर आल्सो हैड गॉट इंजर्ड. उसको ले गए थे उठा के, बिकॉज गोस्वामी वाज अहेड ऑफ डिफेंसेस, सो ही कुड नॉट बी टेकन बैक. And then suddenly he gets up after about 6 or 7, 8 hours. He gets up and he starts walking backwards. He knew where our troops are. So he's in a different dazed state of mind, but he walks back. And then he's received by people. They take him to Chishul, airlifted. He had frostbitten. He lost his legs. He was very badly wounded. His reconstruction surgery could not be done in India, so he was flown to Europe. He for almost 1 year he was in Europe under treatment, then came back, and then later on he died because of that collateral damage which had happened in his body later on. So he got MVC. He was awarded MVC. 2 operators got Sena medal. The technical assistant who was taking shoot, he was awarded Veer Chakra. But abhi hua kya? They were fighting well and well coordinated. By this time, the thinking on top was कि भाई सब कुछ यार, जंगला भी गया, मगर हिल भी गई, ऊपर पेंगांगसो शिरजाब भी गया. Now Leh is in danger. So they were all told to move back, come back and deploy elsewhere. That is जो माउंटेन रेंज है पीछे वाला, पेंगांगसो के पीछे जो एक ऑफशूट जो जंस्कार से आती है, इज कॉल्ड पेंगांगसो माउंटेन्स.
जिसको जो टच करती है चांगला से आती है वो. तो जैसा कि नाउ डिफेंस लाइन विल बी क्लोजर टू ले. व्हेन दे वर विड्रॉइंग, तो 13 फील्ड की जो उस टाइम तक गन्स का ये हो गया था कि देवर आमने सामने, उनके टैंक्स आ रहे थे एंड आवर गन्स आर फायरिंग इन डायरेक्ट फायर बिकॉज गैप में देयर वाज फ्लैट ग्राउंड. So they hit couple of the tanks. So they brought their gun to take on our guns. So our gunners destroyed their gun. But उससे पहले क्या हुआ था, ऑर्डर आ गया था कि withdraw. So there was a holder of 13 field. Uh, no guns, when they withdraw, they don't run, get up and run. So there's a way you withdraw. You somebody goes back, then supports you. Like normal infantry also, there's a kind of withdrawal. So the last guy to withdraw, he said, I'll not come. I have a target in front. I am not withdrawing. So people actually felt bad. Ajit Singh also did same thing. Ajit Singh had done in Gogra. He said, I don't want to come back. I'll fight. So this Havaldar took a shot. They had brought an artillery gun to take out. Their artillery gun was destroyed, and then he withdrew. And later on, of course, he survived. He lived long. So now, अभी सीन क्या हो गया कि इंडिया की भी डिवीजन आ गई. By this time, we had one division worth of troops in Ladakh. बैलेंस हो रहा था. बट उनका अभी डिवीजन बढ़ गया ना, उनका तो शुरू में डिवीजन था. तो they were reinforcing and they had no issues. सड़कें बनी हुई हैं, सब कुछ है. They were coming like ants. और हमारी you see 18 GR की काफी डैमेज हो गई थी. 5 JAR की almost 2 companies written off. People who had come back from battlefield, injured, wounded, frostbitten, they were not fit to fight. But so called 3D हेडक्वार्टर बन गया था लेह में. 114 ब्रिगेड पहले थी, फिर 70 ब्रिगेड भी आ गई. And this is how thereafter Chinese said, okay, enough is enough, we are not coming forward. It's not that we stopped them, they just said, okay, ab iska aage nahi aana, and then they went back. So this is how it finally ended up. And later on, that Brigadier T.N. Rana, who was commander 114 brigade, yesterday article I was reading by General Baljeet Singh. So when he became chief of army staff, he went to Punch, Rajouri, where that 13 field was there. 13 field is still there, a very proud unit. And he said, oh, I want to visit that unit, because as a brigade commander, he had seen those, because what happens, infantry is deployed in front, OP officers, RT officers deployed in front of infantry, guns are behind, where headquarters is also behind. So he had seen them, and he also knew that somebody had disobeyed me when I had said, "Vapis aa jao," he said, I'll not come back. So he went looking for that guy. So he found the guy, and he hugged him, and then called him to army headquarters and presented a special silver salver to this guy. So when people say that we lost 62, yes, we lost at certain level. It was a national disgrace. It was a political failure. It was a failure of top brass of army. We just can't keep hiding. It was a failure in the sense that we refused to use Air Force in offensive role. We used them for airlifting everywhere, Northeast also, Ladakh also. But offensive, where we could have sorted them out when they were coming like convoys coming into our Ladakh, we did nothing. So it was failure at all those levels. And when you have a division there and you're trying to send 3 guys there, 4 guys there facing a division, you are basically sending people to die. This is all failure, I agree. But when it came to contact battles where people fought, whether it was Shirija, whether it was Ajit Singh fighting in Gogra, or that Dorje who stayed back holding DBO for us for 6 months all alone, and people in Zangala who nobody came back, whole company got written off. So when you look at these battles, or Tundup who defended Changla, so there were victories at certain level, which प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत विक्ट्रीज हैं सर. yeah. So very sad outcome, very sad thing to look back and speak about. So glory, yes, gallantry, बहुत ज़्यादा, but overall, yes, we lost it. It's just too bad. It's part of our history. सर वो पॉलिटिकल जो इश्यूज थे और आर्मी के जो एयरफोर्स के जो और नेवी तो खैर इन्वॉल्व नहीं थी, जो आर्म फोर्सेस के इश्यूज थे, उसके ऊपर एक सेपरेट सेशन करेंगे. बट आज लेट्स जस्ट कंसंट्रेट ऑन द बैटल इन लद्दाख. एंड उसके ऊपर आई थिंक लॉट ऑफ व्यूअर्स हैं, उनको भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्यों लीडरशिप ने हमको लिटरली हाथ दिया था उस टाइम पे. तो उसके लिए गाइज आई वुड लाइक टू से दिस बड़ी क्लियरली कि उसके लिए आई विल गेट कर्नल साहब, उसके लिए हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कहां पर हमने मिस्टेक करी है.
और आज यही लोग हैं जो हमको सिखाएंगे आगे जाके। ये लोग हमको आज सिखाते हैं हमारी हिस्ट्री क्या है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, और हमको ये पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसके बाद वाला जो एपिसोड रहेगा 62 पे, उसका वो मेजरली हम लोग डिस्कस करेंगे ईस्ट के बारे में। बैटल ऑफ नथुला है, बहुत सारी वहां पर बैटल्स हुई हैं, बहुत सारे लेजेंड्स बने हैं वहां पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वी विल डिवाइड दिस, एंड उसके बाद एक जो सिनॉप्सिस टाइप हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स मेजरली हुई थी और क्या चीजें हम कर सकते थे जिससे हम लोग अच्छे पोजीशन पे होते हैं। लॉट ऑफ लोग तो सर ये भी बोलते हैं कि अगर हमने उस टाइम पे एयर पावर यूज करी होती तो आज चाइनीज साहब नमस्कार करके खड़ा होता हमारे सामने। बोलो साहब क्या चाहिए। Chinese, no, Chinese had a big weakness. Even today, they are not very happy with हाँ जी, how their air is going to operate. One is not very sure because pudding खाएंगे तो पता चलेगा कितना मीठा है. हाँ Technically, हाँ। yes, they can bring it. उस time what they have done to offset that thing was they had a lot of AD artillery. North East में तो AD आर्टी बहुत ज्यादा थी. So called McMahon line जो कि which defines, हम कहते हैं कि पहाड़ के ऊपर से है और वो कहते हैं नीचे वैली में है. उस रिजेस पे तो उन्होंने एयर डिफेंस आर्टिलरी बहुत अच्छी लगाई हुई थी बिकॉज दे न्यू इंडिया इज गोइंग टू any sensible country would have used air force when your हाँ troops are getting slaughtered, you know. And then India went all the way to US requesting them to use their air force, keeping up अपनी air force रखी हुई है, उनको बोलो तुम भी use करो, who will come to fight your battle? I mean you have to fight your own battles. यहाँ पे air defense का we have no evidence to say that they had similar kind of air defense cover in Ladakh, but logically speaking they would have, because once you bring tanks and artillery in a terrain where there's no cover, they probably had AD cover, but AD cover is okay, it's a deterrent. AD cover तो हर जगह होता है, तो pilots can actually make merry of targets like that. And knowing the motivation level, you have picked up people from Xinjiang, you picked up people from Tibet who actually don't like you. Both these guys are that area occupation of China, force occupation. Xinjiang because वहाँ पे यूरेनियम बड़ा था एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बड़ा था. इनफैक्ट जब गिलगित बल्तिस्तान की बात होती है कि लोग कहते हैं ब्रिटिश को क्या इंटरेस्ट है, भाई दे हैड सेट अप अ न्यूक्लियर मॉनिटरिंग स्टेशन इन गिलगित बल्तिस्तान बिकॉज दैट द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री to monitor Russian activities. Russians were digging uranium from Xinjiang. तो उन लोगों को लड़ने के लिए भेजा है. तो यस, लाइक 3-4 लोगों की जो पोस्ट थी डीबीओ में, जो देपसांग में, व्हेन दे फॉट, दे एक्चुअली हॉल्टेड दोस गाइस, 300 ऑफ देम, 400 गाइस कमिंग, पर उनको फिर पीछे से धक्का मार के बोला चलो. एंड फिर होता क्या है कि एंड देन दे चेंज द टैक्टिक्स, इंस्टेड ऑफ असॉल्टिंग दे विल जस्ट कम एंड कॉर्डन योर सेक्शन. आप 5 बंदे अंदर बैठे हो तो वो 300 मीटर दूर एक घेरा लगा के बैठ जाएंगे. नाउ दे कट यू ऑफ. तो कट ऑफ तो पहले ही थे, पहले भी देयर नो सप्लाई लाइन कमिंग टू यू. अगर आपको पानी लेना है खुद ही नाले से जाके पानी भरना है, कोई आ गया तो आ गया, चिट्ठी आई नहीं आई. तो कटिंग ऑफ दैट टू प्रैक्टिकल इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन साइकोलॉजिकली व्हेन यू सिटिंग इन अ स्मॉल पोस्ट यू कॉर्डन्ड बाय एनिमी, एंड पहले चाहे सप्लाई आती नहीं आती थी, ये तो था कि अपना इलाका है पीछे, अपनी ट्रूप्स आर देयर. अब तो वो भी कट गए, तो then you need a very nerve of steel kind of a thing in your body to stay there and fight. But people did fight. People kept on fighting. We went, see 40. बुरा क्यों लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की कहानी चलो अलग है, हम बात करेंगे. लद्दाख वी हैड अ लाइक व्हाट आई सेड इन द फर्स्ट सेंटेंस कि नहीं सीखोगे तो मार खाओगे. लद्दाख में हमारे पास 47 में भी कुछ नहीं था. 47 में भी जो लद्दाख को बचाया इनिशियली वो लोकल्स ने बचाया, बुद्धिस्ट फॉर होम वायलेंस इज अ टैबू, जिनकी माओ ने बेटों को बोला कि बच्चों पाकिस्तान से लड़ना जरूरी है बिकॉज नहीं लड़ोगे तो मारेंगे, रेप करेंगे, तो लड़ना लेकिन मारना मत, बांध लेना, मेक प्रिजनर्स, डोंट किल देम. सो दिस इज हाउ किड्स वर सेंट आउट टू फाइट. चुआंग रिंचिंग 17 years old, हिज मदर टोल्ड हिम बेटा मारना मत, प्रिजनर ले लेना. सो व्हेन दैट फोर्स सेव्ड नुब्रा फॉर यू and then you created militia troops. Why couldn't we do that before 62 when we were trying to send people walking all the way from Baramulla? Why couldn't we utilize every single youngster in Ladakh to create a force? Because their endurance, their adaptability to the terrain, their knowledge of terrain was unmatched. आपने यहाँ से बारामूला से बटालियन को उठा के भेज दिया बेचारों को, पैदल को पता नहीं नॉर्थ की तरह साउथ की तरह. एंड फिर आप बैठ जाते हो एंड देन यू आर टोल्ड कि अटैक आएगा तो इधर से आएगा, वो आ गया साइडों से, रिजंगला पे साइड से भी आ गया, फ्रंट से भी आ गया. सो इट इज नॉट देयर फॉल्ट. यू नीड टाइम एंड नॉलेज ऑफ द टेरेन. अभी इस बार अभी जो आफ्टर दिस लेटेस्ट स्टैंड ऑफ एंड
People, our army climbed up Kailash range. Who was the guy who was supplying them? The locals. पानी के पीपे भर भर के they went and they were feeding जी SFF. जी जी So when you had this kind of a thing, who had actually saved you in 47, saved Ladakh for you in 47, we didn't learn a lesson. उसके बाद हम भूल गए, छोड़ दो. फिर जब 62 आया तो फिर जागे, उसके बाद फिर भूल गए. फिर जब 65 आया फिर रेज की उस टाइम. तो थैंक गॉड कि हमारे पास वी हैड समबडी कॉल्ड कर्नल चौहान रिंचिंग who fought in 47, 62, 65, 71. महावीर चक्र, सेना मेडल, मेंशन डिस्पैचेस एंड महावीर चक्र. अगर वो ना होते और उसके तरीके के लोग ना होते हु कुड गैल्वनाइज पीपल एंड गैदर देम एंड ट्रेन देम इन 30 days टू फाइट, तो हमारे पास ईस्टर्न लद्दाख की सिचुएशन तो 65 में भी बननी थी और 71 में भी बन गई थी. बट हमने नहीं सबक सीखा, लड़ाई खत्म, वी फॉरगॉट अबाउट इट. एंड देन जब अगली बार विपता आई, आज भी देखो, इफ यू हैड कर्नल चिवांग रिंचन with a school in anywhere in Ladakh, training people, whether Ladakhis or other, like we have a Sechin battle school. This जी battle school should have come up in 47, 48 itself. We could have produced so-called snow leopards. तो फिर देखते हैं यहाँ कौन लड़ता है आगे. We don't do it, है ना. और लद्दाखी बेचारे नौकरी ढूंढते ढूंढते come to places like Jammu, and because वहाँ jobs कहाँ हैं. So having soldiers, paid soldiers, serving their own land, है तो लैंड सारी है, बट वी बिलोंग टू प्लेस व्हिच इज थ्रेटन्ड. हाँ हाँ सर उसका अलग इफेक्ट हाँ सन ऑफ द सॉइल बड़ा बड़ा डिफरेंस होता है सर, है. तो नहीं, बहुत डिफरेंस होता है. अभी भी नहीं. एक लोकल जो एक बंदा कर सकता है ना, प्रॉब्ली वी नीड 3 to 4 जवान्स हु हैव जस्ट कम फ्रॉम समवेयर टू जी जी टू डू व्हाट ही कैन डू. इवन कारगिल में सर लद्दाख स्काउट्स ही थे जो सबसे पहले गए थे ऊपर. वो थे, और जो आपको कौन म्यूल्स थे वो? और जो आपको सप्लाई कर रहे थे लोकल्स, सारे यूजिंग वही देयर थे. म्यूल्स पोर्टर्स. सो वी लर्नड लेसन वेरी लेट. 47 में किया होता, 62 में लद्दाख में वी कुड हैव डन मच बेटर. नहीं सर मेरे हिसाब से तो यू नो मैं तो गया हूँ सर. आई मीन मैंने देखा है, पेंगोंग सो भी देखा है, एंड वो चांगला भी गया हूँ ऊपर. मेरे हिसाब से सर जब वहां जाते हो ना, एक देयर इज एन इंडियननेस अबाउट दैट प्लेस सर. मैंने इतने पेट्रियाटिक लोग आज तक नहीं देखे. ट्रू. आई मीन वो आपको हेलो हाय गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, वो आपको जय हिंद बोलते हैं. इतने पेट्रियाटिक लोग मैंने आज तक नहीं देखे सर. एंड इनके बेचारों को हमने वी ट्रीटेड देम लाइक किसी को पता ही नहीं है. अभी आप किसी को पूछ लो भाई ले दिखा दे मैप में कहाँ है, किसी को पता नहीं है. अभी तो मेरे को थोड़ी सी खुशी होती है कि ठीक है हमारे 15-20 लोग जो गए ठीक है, बट उनकी जान की वजह से एटलीस्ट लोगों में थोड़ी अकल आई है. एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ओपनली, आई मे बी रिडिक्यूल्ड आफ्टर दिस, बट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स वाज दैट इंडिया रियलाइज्ड कि भाई हमारा वहां पर भी एक लैंड है. हमारे जब वहां पर लोग मरे तब लोगों ने जाके उस गलवान में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, नहीं तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था. एंड ये चीज बहुत बहुत खराब है. Yeah, luckily, after President Prime Minister came to power, उसके बाद लद्दाख में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई. जी और जो वो 2014 तो नहीं, 2016 से लेके जो उसके बाद गलवान इंसिडेंट से पहले जो हुआ, वो हुआ भी इसलिए बिकॉज वी वर बिल्डिंग रोड्स वेयर दे थॉट वी आर थ्रेटनिंग देम. तो हम लोग 50 साल पीछे हैं, 50-60 साल पीछे, मे बी 70 साल. व्हाट शुड हैव बीन डन इन 50s is being done in 2010s and 20s. But my way of looking at it is, अभी आज लद्दाख को देखो, लद्दाख अभी इस टाइम कमर्शलाइज है. लॉट ऑफ टूरिज्म, बिजली भी आ गई, they getting सब used कुछ to है modern सर, सब living. कुछ है. सब कुछ है ना, now they're becoming like us. हम्म Potent human resource is now getting exposed to things which is like you said ना, the Indianness. वो अभी क्या धीरे धीरे क्या होगा, नाउ दे आल्सो हैव देयर एम्बिशन, इंस्पिरेशन होनी भी चाहिए, व्हाई नॉट डेवलपमेंट, आई एम नॉट Why not? अगेंस्ट डेवलपमेंट. बट जो बीच में जो इंटरवीनिंग टाइम था विच कुड हैव डन वंडर्स फॉर देम एंड फॉर अस, वो हमने जाने दिया अपने हाथ से. जी जी नो दैट इज समथिंग क्वेश्चन, दैट. नो क्वेश्चन सर. एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं सर, काफी सारे लोगों ने लिखे हैं, सो जस्ट टेक अ फ्यू क्वेश्चंस. आई मीन यू नो बिफोर आई स्टार्ट दिस गाइस, बहुत ही आई मीन फॉर समवन
जिसने ये पढ़ा है, और सर ने तो ऑब्वियसली काफी इसके बारे में पढ़ा है, लिखा भी है, और आपने जिस तरह से स्टोरी सुनाई सर, ये तो नाम पते सारे आपको पता है। नाम, I told you पेपर I ना। don't carry notes, no notes. दैट इज इम्प्रेसिव सर, आई मस्ट से, एंड अ लॉट ऑफ पीपल से दिस। काफी सारे लोगों ने इसके बारे में बात भी करी है, ग्रुप में भी देखा होगा सर आपने, काफी लोगों ने लिखा है कि सर का स्टोरी टेलिंग एबिलिटी इज रियली नाइस, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज, ये चीजें हमारे बाद भी रहेंगी, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई वांट टू डॉक्यूमेंट दिस, कि जो हमारी लॉट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसमें ज्यादा साउंड इफेक्ट होता है, उसमें बॉम्ब फट रहे हैं, नहीं, वी वांट टू हियर द स्टोरी। मेरे को स्टोरी से ज्यादा इम्पैक्ट है, सो दैट इज समथिंग, थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दैट आउट सर। गाइस, लाइक दिस वीडियो यार, सब्सक्राइब, ये चीज बहुत बहुत लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। आई वुड रियली रिक्वेस्ट, आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, अपने फैमिलीज को फॉरवर्ड करिए। ऑल्दो ये 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो है, बट इट शुड रीच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल। बाकी सब हमारी जो एनालिसिस हैं, और जब भी जो भी हम लोग डेफ टॉक्स पे करते हैं, वो सब सेपरेट हैं, बट ये चीज, जो स्टोरीज हैं हमारे, जिसमें हमने मिस्टेक्स करी हैं, और जो हम मिस्टेक्स दोबारा नहीं होने देना चाहिए। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन मोहित शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि व्हेन कैप्टन रामचंद्र, कैप्टन ऑनररी बाद में बने वो, रामचंद्र यादव रिटर्न फ्रॉम रेजांगला, व्हाई वाज ही ट्रीटेड लाइक थ्रेटेंड ऑफ कोर्ट मार्शल एंड आस्क्ड टू रिमेन साइलेंट? Mohit ji, thanks for the question. I am a student of military history, so my research finishes when the battle finishes. No comments. उसका एक लेजेंड है जो वो खुद बोलते हैं, रामचंद्र See, साहब, कि बहुत सारे there's a लोगों को मारा था, जब आके बोला तो बोला झूठ बोल रहा है तू। होता है, तो होता है. या, See, you बट had given up, no? You had given up. Somebody on top had given up. जब आप लोगों को बोल रहे हो कि आप गुरुंग हिल छोड़ और दो मगर हिल को छोड़ के पीछे आ जाओ, और एक डिवीजन आपने बिल्डअप कर दी लेकिन ले में रख ली, तो somebody has given up, ना? जी। So जब कोई भी उसके खिलाफ जाके बोलेगा, तो easiest thing is कि अगर if you subordinate to somebody, तो you shut up. और कोई बोलेगा हम लड़े हैं साहब, हमने मारा है, एंड तो इसके बारे में तो सर चाइनीज ने भी लिखा है दैट दिस वाज, आई मीन दे हैव नॉट गिवन द नंबर्स, बट वो खुद बोलते हैं दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट, द ब्लडीएस्ट फेज दैट दे हैव एवर फॉट इन देयर हिस्ट्री, दैट कि एक जगह, छोटी सी जगह में कितने हमारे सोल्जर्स का लॉस हुआ, दे नेवर एक्नॉलेज द लॉसेस। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। no, they could only walk into Rezangla company held locality after everybody was dead. जी, पहले घुस नहीं पाए वो, It was करेक्ट सर। not कि assault कर दिया, हिम्मत नहीं पड़ी हाँ, that. हिम्मत नहीं पड़ी सर, करेक्ट सर। How were Indian troops affected in 1967 Lathula conflict, just 5 years after the big loss against China? What was the difference at that time? So ये बड़ा interesting question है। इसको बाद में भी टैकल कर सकते हैं, बट आई थिंक इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ. When it comes to individual gallantry fighting as a unit or सब unit company, इसमें हजारों एग्जांपल्स हैं, और वही नथुला में बाद में हुआ. Only difference was there was somebody up the chain who had guts. Same somebody Exactly. who got Bangladesh liberated against orders, General Sagar Singh. तो उनको तो बोला था आप मेघना रिवर के उधर ही रहो 71 में, वील हैव इंडिपेंडेंट बंगला भूमि एंड वील हैव इंडिया, बीच में ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान रहेगा. ही से हेल विद इट, देयर इज अपॉर्चुनिटी, ही क्रॉस मेघना एंड रश टू ढाका. अगेन ही डिसोबेड General Manisha that time, he disobeyed General Manisha and Nathula. So you're right, same people. I told you, na, नहीं, failures were happening at certain level, not at the ground level. To still fight. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड कल्प्रिश, एक और चीज है कि याद करेगा कि इवन इन दीज बैटल्स, जो सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड है, दे नेवर गिव अप। यार नाम नमक निशान पे लड़ते हैं ना. सोल्जर को क्या है, ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ दिल्ली और बॉम्बे है. उसकी यूनिट का नाम है, उसका नमक है, और वो निशान है, झंडा जो उसका कलर है अपनी यूनिट का. हम आर्टी वाले, हमारी गन्स आर कॉल्ड कलर्स. Infantry and armored units have flags which they call colors, and that's why we never leave a gun in the battle, because leaving color behind is like the ultimate disgrace. So वो नाम नमक निशान पे लड़ते हैं, ऊपर जो हो रहा है वो. इमेजिन द दम इन द गाय सर, 6 महीने वो बेचारा डीबीओ में अकेला रहा, इमेजिन. और करता क्या होगा टेक्निकली सारा दिन? सोचो आप एक कमरे में एक दिन बैठ नहीं सकते आप, और वेदर -40 डिग्री में बैठा है वहां पर वो. विंटर्स,
उसके बाद तो नवंबर में लड़ाई खत्म हुई है, और उसके बाद फिर दिसंबर में पीक ऑफ विंटर्स, ना उसको पता -30। कोई आएगा वहां पर, ना उसको पता। उसके हिसाब से तो यार वो भी चाइनीज भी चले गए, हिंदुस्तानी भी चले गए, मैं तो फंस गया बीच में। पर रुका रहा हो। रुका रहा। See, we know the story of Japanese soldiers who kept on fighting, वर्ल्ड वॉर खत्म होगी और फॉर इयर्स दे वर, बट हमें अपने अपने दोरजे का नहीं पता ना। अपना भी तो था 6 महीने, और अकेला था वो तो, फिर भी जापानीज वर कपल ऑफ देम टुगेदर, ये तो सर अकेला उसका था। तो एयरफील्ड का नाम चेंज करना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड वी मस्ट, इट शुड बिकम दोरजे एयरफील्ड। या व्हाई देयर इज नॉट। नो क्वेश्चन। वो ऐसी चीज सुनने को नहीं मिलती सर। और वो तो 1973 तक जापानीज था सर, बट दैट वेदर दैट ही वाज सिटिंग इन हिज ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल वेदर, कोकोनट्स खा रहा था वो। साथ में यहाँ दोस्त भी पर था। अभी ट्रू, ना ट्रू, पेड़ ना पेड़ की जात ना कुछ वहां पर। आई मीन देयर इज नथिंग। नथिंग। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है आपके लिए। व्हाट लक, आई हैव बीन रीडिंग कर्नल्स बुक ऑन द इन द निक ऑफ टाइम सेविंग कश्मीर। सर थैंक्स फॉर राइटिंग दिस डाउन फॉर अस। Humbled, Naveen ji, so kind. Sir, was there any movement by Pakistan army during this time? In 62? जी No, no. 62 का के टाइम चाइना और पाकिस्तान का अपना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, जी जिसको 63 में शक्सम वैली दे के जान छुड़ाई पाकिस्तान ने। सो 65 के टाइम पे there was some movement from Chinese side. They had promised China, Pakistan will come for your help. 71 also there was movement, but nothing happened. 62 तो उनका अपना रिलेशन भी ठीक नहीं था। शख्स नाम क्यों दिया दहेज में? इसलिए दिया ना कि भाई ले ले जान छोड़। It जो was not पाकिस्तान gifted, और it was snatched, it was trade off. ट्रेड ऑफ, जो That happened in पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप ही इस जगह से आगे बढ़ा है। yeah, हाँ जी true. एब्सोल्युटली सर। बहुत आई मीन नवीन साहब एब्सोल्युटली, एज आई सेड, नथुला एंड द ईस्ट के ऊपर वी विल डू अगेन अ डिटेल्ड एपिसोड, ताकि आप वी कैन लिव थ्रू दैट एंटायर थिंग। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। Sir, Vishal sir says, do you think in the future we'll take back XI Hind, or the LAC Plus will remain the international boundary between India and China? Crystal gazing is very difficult. Knowing Chinese ambitions, they are not going to go away. One thing is there, that for China and India to develop, whether together or separately, this dispute has to get settled somewhere. It can't, as long as this thing is there. China also understands this thing, that they can't become a superpower with this kind of dispute with a country like India over 3,000 kilometers. Where the boundary is going to settle, nobody knows. I'm no one to predict. But imagining that China will say, okay, we go back to 1947 line, too much. अभी देखो, अभी जो नेगोशिएशंस के बाद जो फिंगर 4 वाला इलाका खाली किया, उस पर ही इंडिया में कितना अप्रोर हुआ है। मे बी इफ यू आस्क अ सोल्जर 1-to-1, he'll say, यार करो खत्म, लाइन टका लो, चलो फिनिश इट ऑफ। बट इट्स नॉट दैट सिंपल फॉर पॉलिटिशियंस। Shipping can still do something. He is a dictator. यहाँ पे गवर्नमेंट, इफ यू गिव टेरिटरी टू, हाँ या जा 2012 की तरह करो आप, जैसे उस टाइम गवर्नमेंट ने किया था। जो डमचौक के साउथ में वो आए थे तो बोला था आने दो, डोंट फ्लेयर अप। बट विद दिस गवर्नमेंट दैट विल नॉट हैपन, एंड नाउ दैट वर्ल्ड हैज चेंज्ड, थिंग्स कांट बी हिडन एनी लॉन्गर। So I can't really predict, but as a soldier, I hope and pray that it gets settled at some point of time and we move on. एब्सोल्युटली गाइस, एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ईस्ट से ज्यादा चाइनीज का फोकस यहाँ पर है। ईस्ट, यस दे हैव अ लॉट ऑफ फोकस देयर, देयर इज नो क्वेश्चन। वो साउथ टिबेट बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, बट ये थोड़ा उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके लिए ये लद्दाख इज लाइक वन ऑफ द 5 फिंगर्स ऑफ टिबेट, सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। लद्दाख चला गया, और लद्दाख छोड़ो, नुब्रा वैली ही खुल जाए उनके लिए, तो पाकिस्तान और चाइना फिर सुपर हाईवे हो गया ना। एक वो, और दूसरा उन्होंने जो रोड बनाई है वो एक्साइचिन के बीच में से जाती है। इंटरेस्टिंगली देयर इज अ लेजेंड जो बोलता है कि उन चाइनीज ने हमको बताया था कि हम ये रोड बना रहे हैं, सब आपको टैक्स वैक्स दिया, आके ले लो, आके कर लो अपना, जो करिए आपको कर लो, लेट्स कम इनटू अ डील। उस टाइम पे हमारे जो सीनियर लोग थे, और आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम लेना इस प्योर एपिसोड में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, अभी भी बर्थडे हुआ है तो नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, नाम नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये पूरा जो, इट विल बी बेसिकली अ डिसऑनर टू ऑल द पीपल सर्व्ड इन दैट रीजन। बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं चाहिए। 56 में चाइनीज ने रोड बनानी शुरू कर दी।
और ये चीज सर ने पिछली बारी में बताई थी, एयरफोर्स वाले जो गए थे, एक विंग कमांडर नाथ साहब हैं, महावीर चक्र एंड बार, वो तो बोलते रहेंगे कि आप हमको 2 दिन दे दो, इनकी रोड क्या है, चाइनीज नहीं बचेगा यहाँ पर, बट हमने नहीं करा. सो व्हाट सर इज सेइंग, एंड सर का जो अंदर से जो यू कैन सी द पेन is very very clear because of this कि betrayal था. This was an absolute betrayal from the leadership, and there is no question about that. Sir, thank you so much. We've gone through 1 hour and 15 minutes. Beautiful session. मैं मजाक नहीं कर रहा. Thank- यहाँ की जो Thanks, बाल Adi. होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं सर. होने भी गुस्सा चाहिए, you know. इंडियन है तो होने भी चाहिए. और And, आदि यू डूइंग वंडरफुल वर्क. आई मीन एज अ यंगस्टर सो मच ऑफ टाइम यू डिवोटिंग. आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, करनी नहीं सर, चाहिए. मेरे एंड को तो शौक है सर, एंड आई फॉर मी इट्स एन ऑनर टू एक्चुअली स्पीक टू ऑल द वेटरन्स एंड एक्सपर्ट्स, बिकॉज आई हैव टू लर्न माई सेल्फ. इफ आई डोंट लर्न, हाउ एम आई गोना टीच माई नेक्स्ट जनरेशन? दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक ऑफ. कि क्योंकि जो हम लोग तो स्कूल में पढ़े थे, कि हमको तो कुछ पता भी नहीं था कि होता क्या है ये सब चीजें, जो हमारी हिस्ट्री बुक्स में किसी ने बताया नहीं. कि बट आजकल का जनरेशन थोड़ा सा स्मार्ट दिखता है इन चीजों में, क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, पीपल आर अग्रेसिव. तो मेरा वही है, थोड़ा सा वो फायर में बना रहे, और आप लोगों की हेल्प से हो रहा है सर. थैंक यू सो मच. थैंक नेक्स्ट यू. टाइम सर ऑन द बैटल इन द ईस्ट. टिल या देन सर, श्योर. जय हिंद. जय हिंद. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर.